नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र भूटानी है और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, 3 इडियट्स में एडी करके और बहुत सारी फिल्म्स के अंदर एडी एंड एक्टिंग करने के बाद मैं याद दिलाऊंगा बहुत सारी फिल्म्स हैं, पहले गेस कर लेना किस किस में आपने उनको देखा है। पर अब वो अपनी डेब्यू फिल्म के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है सरजमीन। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, गेस नहीं कर रहे ना कायोजे ईरानी सर। सर वेलकम टू द शो। Thank you so much. हमारे स्टार कास्ट है जिसके अंदर पृथ्वीराज सुकुमरन सर है जो कि यार सुपरस्टार से कम नहीं है, उनका भी वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर आपके पास शुरुआत करते हैं आपसे। सर जमीन, सर बहुत सारी पैट्रियोटिक फिल्म्स बन चुकी हैं हमारे देश के अंदर, हाउ दिस वन इज डिफरेंट? क्योंकि पेट्रियाटिज्म और नेशन इसकी फिल्म, ये जो फिल्म है इज़ अ बैकड्रॉप ऑफ दिस फिल्म। ये फिल्म जो है एक्चुअली ये एक ड्रामा, फैमिली का ड्रामा है, एक बाप बेटे और एक माँ के अंदर। तो ये जो फिल्म है इट इज़ एन इमोशनल थ्रिलर। इट इज़ हाउ आई फील कि द ऑडियंस विल कनेक्ट टू द स्टोरी। कश्मीर में जो इट इज़ सेट इन कश्मीर और ये जो एक्शन दिखा है आपको ट्रेलर टीज़र में एंड पेट्रियाटिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, आप उनको लेके कीप दैट एज द बैकड्रॉप एंड द एसेंस ऑफ द फिल्म। बट द एक्चुअल जो फिल्म है इट इज़ डीलिंग विथ ह्यूमन इमोशन बिटवीन अ फैमिली। और मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट हुआ ये फिल्म की तरफ क्योंकि आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द फैमिली ड्रामा इन द फिल्म। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीफ है कि एज एन ऑडियंस मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए एंड हाउ डू आई कनेक्ट विथ इट? आई कनेक्ट विथ इट व्हेन इट्स क्लोज टू माई होम। नाइस। सो आप इसको क्या कहेंगे, मतलब ये पॉलिटिकल थ्रिलर है या फिर अपना मिलिट्री ड्रामा है या इट्स एन इमोशनल थ्रिलर? इमोशनल थ्रिलर। क्योंकि फिल्म के एंड में मेरी होप रहेगी कि यू विल कम आउट विद अ टीयर इन योर आई। दैट्स अमेजिंग। एंड ये शायद हमारी फिल्म्स का मेन काम ये होता है, अगर दिल को छू जाए ना वो सर सबसे प्यारी फिल्म होती है ना। इतने सारे इमोशंस हैं, थ्रिल है एंड इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। सो हम पृथ्वी सर के पास आते हैं। सर आप इस प्रोजेक्ट में कब जुड़े और आपको कैसा लगा जुड़ने के बाद? Cub, I think about 3 years back, 2022 or something. I was shooting for another film somewhere outside of India, and Karan Johar sent me the script, and he wanted me to read it. I read the script, and the same day I told him I wanted to do it. When I said yes to it, this film did not have Ibrahim or Kajol in it, so I did not even know who was in it or who was directing it. I just said, yeah, I want to do it. Then he told me Kayoze is directing it, and I watched Kayoze's short film. I don't know if you have seen it. It's a beautiful film, and I really loved the filmmaking in it. And I thought, okay, I mean, if this filmmaker is lending his vision to this script, then chances are that it'll end up being a good film. And that's how I said yes to it, and I'm really, really glad I did, because I truly do believe that it's a beautifully intricate, complex human drama, narrated against this spectacular backdrop of Kashmir and insurgency and the army. Definitely they will see it on Jio Hotstar. And सर आपका ये डेब्यू है इस फिल्म से। सर इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, मतलब जहाँ पे एज एन एडी आपने सीखा है, एज एन एक्टर भी आपने काम करा है। सो इसके थ्रू आप डेब्यू कर रहे हो, तो हाउ आर यू फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड व्हाट वर द चैलेंजेस टू बिकम अ डायरेक्टर? I started working as an AD, I think at the age of 18 or 19. और it has been a long journey कि I've come till here to make my first feature film debut. तो the challenges are of course कि that you find your place in the world, कि you work as hard as you can, you learn as much as you can, and you come till here to make your place in the world. I am more than anything right now क्योंकि there are people over here and there's a line behind me of thousands who would like to be in my position. So as much as it's hard and tough and all of that, I can't complain because it is the most exciting period of my life. मैं हमेशा बोलता हूँ कि my worst day on Sarzameen is better than any other day. Right? And it is genuinely, today somebody asked me, are you nervous? I said, yeah, I'm nervous and this and that, but I'm really excited and I'm really grateful. And we've taken a long time to make this film. It's been I think 2.5-3 year journey, and finally it's ready. And Karan told me the other day, Kayo, it's no longer your film. Now it's the audience's film. Yeah. So
stop making changes. क्योंकि एक ऐसा फिल्म मेकर आई थिंक एंड मोमेंट पे भी हाँ, आपको हाँ, लगता तो है चलते कि रहते हैं। कुछ तो यहाँ चलते पे रहता चेंज हो सकता है, राइट? 100%. सो अभी भी हो रहे हैं चेंजेस आजकल में, अभी हो गए अलाउड नहीं. एंड आपने करण सर का मेंशन करा, हाउ वाज वर्किंग विद करण जोहर सर एज अ डायरेक्टर नाउ? मतलब आपने उनकी फिल्म्स में असिस्ट मैं करा है उनको? या आई डिड, मैंने उनके साथ असिस्ट किया था ऑन बॉम्बे टॉकीज, ऑन लव स्टोरीज. फिर हम लोग ने साथ में तख्त शुरू की थी, बट दैट ऑफ कोर्स बिकॉज द पैंडेमिक वी हैड टू स्टॉप इट. तो करण इज विदाउट अ डाउट आई वुड से द बेस्ट प्रोड्यूसर फॉर अ डायरेक्टर, क्योंकि he will give you his opinion, but he'll make sure कि it is his opinion and not his rule. He said, आपका vision है, go make it. If you fault, I'll still support you, and if you succeed, I'll celebrate with you. So he is genuinely, he's a director's producer. So I am in esteemed company. I am protected in Dharma Productions. I'm extremely happy, and I've been in this company now for 15 years. मैं आया था as a AD with Shakun Batra. दो हम लोग आए थे, and then I've done multiple films and short films and all of that. And this is genuinely Karan. I know what he has gone through to get this film being put together, and I can only be grateful for it. सर मैं वापस ले चलता हूँ, अब हम बताते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर आपने सर को देखा होगा, एंड दैट वाज लाइक एन अमेजिंग रोल. एंड वो कैसे हुआ था वो एक्टिंग, एंड फिर वापस भी हमें दिखे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना था. दिखे तो हैं छोटे छोटे रोल भी मैंने पकड़े हुए. हाँ, मैंने एक्चुअली आई वाज एन एडी ऑन अ मूवी कॉल्ड एक में और एक तू. शकुन बत्रा ने जो डायरेक्ट की थी. शकुन मेरा फर्स्ट एडी रहता था राम माधवानी के साथ, और मैं उसका सेकंड एडी. तो हम लोग साथ में आ गए धर्मा, और वो बोला आजा आजा. तो शूट ख़त्म की हम लोग ने, और शकुन दिन में एडिट करता था और मैं नाइट को जाके मेरा पास करता था एडिटिंग के. मैं उसका डीए था. तो शाम को मैं 6 बजे ऑफिस पहुंच जाता था एडिटिंग के लिए. तो एक दिन करण से मुलाकात हुई, एंड तब से उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू बिकम एन एक्टर, यू गॉट अ फेस, अरे विथ योर फादर्स ब्लड तो यू एक्ट वेल ऑल्सो. आई सेड अरे मेरा पारसी हिंदी आप छोड़ो प्लीज़. तो तब मैंने बोला ठीक है स्टूडेंट ऑफ द ईयर कर लेते. एंड बट मेरा हमेशा से माई गर्लफ्रेंड एंड वाइफ हैज़ बिन डायरेक्शन. आई वॉन्ट टू बी ओनली हियर सिटिंग बिहाइंड द मॉनिटर एंड sipping a coffee and enjoying the screen and what it has to offer. नाइस सर. पृथ्वी सर आपके पास आते हैं. सर आप भी खुद भी एक डायरेक्टर हो, और जब डायरेक्ट करते हो तो आप सर बवाल मचा देते हो. अभी थोड़े थोड़े टाइम के बाद आते हो, सो हम वेट भी कर रहे हैं. सो अभी इस सेट के ऊपर आपका वो डायरेक्टर वाला साइड आप कैसे, लाइक यू हाउ यू कीप इट असाइड, राइट? कि एक अंदर का डायरेक्टर. It's been the easiest thing for me to do ever since I've turned director. I've said this multiple times that before I did my first film, even on sets where I'm there just as an actor, I constantly had the technician in me switched on. You know, I used to be very aware of, okay, this is what they're trying to do, that's what the cameraman has done, that's how it's been lit up, that's how the camera is moving and all that. Ever since I've done my first film, I think it's been like a subconscious switch where now the easiest and the most comfortable thing that I can do is land up on a set and be absolutely unaware of the technicalities of what is being shot. I just want the director to tell me what he or she wants me to do, and I'm more than happy doing just that. And I'm not going to switch that on till I direct my next film. Yeah. That's nice. But क्या उसने हेल्प करी आपको, लाइक कि एज एन एक्टर टू लर्न एंड ग्रो एज एन एक्टर, द डायरेक्टर थिंग? So I think the actor that I am and the awareness of the process of an actor has helped me in a big way as a director. I take a lot of pride in trying to get the best possible performances from my actors, and I think a lot of it is because I'm privy to the process. I've been there, I've done that so many times. But I should also say that whatever little knowledge I have about the technicalities of filmmaking does help me as an actor as well, you know. It is, I'd be lying if I told you that, yeah, the purest form of acting would be where you're not aware of the camera, you're not aware of the lights and all that. But I do think, as romantic as that sounds, as an actor who's involved in cinema, especially, I do think you have an advantage if you know how the process of filmmaking takes shape. If you know
okay, right now the camera is on this particular lens and you're this far away from the camera, so this is how you're being captured. And okay, this is how it's been lit up, so the contrast ratio is like that. So if you are aware, it is an advantage. But it is also very important that you be aware of all that, and then when the director calls for action, you let go of all that. Yeah. That's amazing. And coming to you, sir, again. Sir, इतनी अच्छी कास्ट का ensemble, मतलब it's whole India and being इब्राहिम की मैं ये डेब्यू ही कहूँगा because ये शायद पहले शूट हुई थी उससे, right? And काजोल मैम एंड सर, ये कैसे कास्टिंग हुई? एंड शायद पंचमी गारवी ने इसकी कास्टिंग भी करी है, जो और अदर जो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी, बहुत। सो हाउ वाज ऑल दैट प्रोसेस? तो करण सर ने मेरे को बताया कि वी शुड गो टू फर्स्ट थिंग टू गो पृथ्वी सर. उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा उन्होंने और उन्होंने पढ़ी, एंड सर बाय आफ्टर रीडिंग बाय इवनिंग सेड यस. आई वॉज ओवरजॉयड. आई वॉज नॉट बिलीविंग इट. मुझे एट वन पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि करण सर ऐसे बोल रहे हैं, बाद में बोले नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. फिर हम लोग काजोल मैम के वहाँ गए. हम लोग बाय लंच आई हैड नरेटेड टू हर. मैंने सर को मैसेज भी किया था. मैंने मैसेज किया था लुक्स डाउटफुल, तो लेकिन शाम को उनका फ़ोन आया, सेड लव द स्क्रिप्ट, आई एम डूइंग इट. और इब्राहिम जो था, मैं करण सर के फिल्म के सेट पे गया था, रॉकी और रानी, और वो स्टैंड इन कर रहे थे फॉर रणवीर सिंह. अच्छा. तो मैं उसको देख रहा था मॉनिटर पे, एंड आई वाज लाइक दिस बॉय इज जस्ट मेस्मराइजिंग ऑन कैमरा. तो दैट वाज द मेन कास्टिंग. देन देयर इज अ सपोर्टिंग कास्ट दैट पंचमी डिड द कास्टिंग ऑफ. तो we've got K.C. Shankar sir, Jitendra Joshi. We're launching a young boy called Runav, very talented young boy. And there is a special appearance by Boman Irani. Who is also very promising. Who is also, we are also launching him as a very promising role. And yeah, so that was the casting. I telling you, casting the film, once you cast your film right, that is your direction. That is your direction. Once you've cast your film right, you can't go wrong. सर, ये फिल्म जो है ना हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई और हमारे देश के बारे में बात करती है, तो हाउ डू यू सी इट? मतलब इज इट लाइक कि जो अभी कंडीशन पिछले कुछ महीने के अंदर हमारे क्योंकि आपने कश्मीर में भी शूट करा, मनाली में उसका शूट हुआ था, सो हाउ डू यू सी इट नाउ? मतलब क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी उसके रिगार्डिंग? फिल्म शूट के रिगार्डिंग अगर आप शूट करने जा रहे हो तो कुछ नहीं. डू यू फील दैट कि कुछ चेंजेस होंगे हमारी इंडस्ट्री के अंदर? What would I change in the film? नहीं, इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली अगर हम वहाँ पे जाके शूट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर. हम लोग ने एक्चुअली कश्मीर में शूट नहीं की, मनाली में करा. हम लोग ने मनाली में की थी, बिकॉज मुझे जो लोकेशन चाहिए थे, I was not finding those in Kashmir. We just did a small B-unit shoot in Kashmir for our wides and all of that, but most of the principal photography हम लोग ने मनाली में की थी. And this is around 2 years ago we had done this. So we have not shot in Kashmir, so I don't know what are the changes, and I've not been to Kashmir in a while. अच्छा in a while, okay. In a while, yeah. वैसे तो हाँ वैसे तो गया हूँ shoot के लिए मैं. I went and met the army. I went before we started the shoot. I spent time with the army. I went to Kupwara, where the film is based. I went to Keran, which is on the LOC. Stayed the night in the army camp with them. Spoke to them, but I wanted to actually talk to them about what goes on inside them. You know, I want to talk about what happens to their families. This film, it's dedicated to our army servicemen and their families. So that is very important. Nice. So basically, it's not that war kind of film. It's basically inside. There's no war in the film. It is set in Kashmir. It is not in wartime. But there is a backdrop of insurgency and terrorism, and of course in Kashmir, which is always an ongoing issue. But at the end of the day, the film is a family drama. It is because when you talk about that, your conflict becomes external. While I was very keen that in this film the conflict should be internal, because if you see the trailer, you understand that it is a father-son. It is a family drama. That is the main crux of the story. I think that makes it different from other stories. I think because sure, but it was not done to be different. Okay. It was not consciously done to be different. That is what attracted me to the story when I first read it. And I genuinely feel that you have to find yourself in the script. If you manage to find yourself in the script, like I found myself in all three characters.
I found myself somewhere in Harman, in Vijay Menon, and in Meher. So if you find that, and if I connect with the film, I know for a fact that this is a film I would 100% go and watch. So why won't I make it? That's nice. I'm waiting for the film now. And sir, आप इतनी languages में आप like काम कर चुके हो. So how do you manage? मतलब आप shift कैसे करते हो? आपने सीखी है, कहाँ से training ली है, या फिर specially आप film के लिए training लेते हो, या you know like each and every language? No, I mean, with Hindi, I am at an advantage because I also know to read and write Hindi because I did most of my schooling in Sainik school. So, you know, Hindi was taught in the school. I'm very fluent, of course, in Malayalam and English. I can also speak Tamil. Telugu is one language that I've been increasingly working in, which I have no idea about, but I want to learn that language. But I'm privileged enough to have been able to dub most of my films in all 5 languages in my own voice. But yeah, Hindi, I still do need a lot of tutoring in terms of how to enunciate and pronounce words. And I have to be especially thankful to Vikas, my diction tutor, because he's been working with me for almost every single Hindi film I've done. He first worked with me in Aurangzeb, and even for Sarzameen, when I dubbed, I wanted Vikas to be there, and he was. Even when I dubbed Salar in Hindi, I flew down Vikas to Cochin and wanted him to be in the dubbing studio with me because he is an exceptional diction tutor. But I am at an advantage because it's not like it's a completely alien language to me. I understand Hindi, I can read and write Hindi. So yeah. No, बहुत अच्छे से सुन के भी कुछ जवाब भी दे रहे हैं सर. उसका प्रूफ है. सर आप गाते भी हो सर. एक तो सर बनता है song. It's a mistake. I should not be singing. Every time a music director calls me to sing, I'm like, listen, the whole charm of Prithviraj singing is no longer there, so just get a better singer. So, and सर मैं म्यूजिक की बात करता हूँ. मतलब सर कोई छोड़ा ही नहीं आपने सर. इतने मतलब अच्छे अच्छे कलाकारों को आपने साथ में ले आए हैं, क्योंकि बी प्राक भी मतलब हर एक जोन के लिए, हर एक सॉन्ग के लिए अलग अलग सिंगर आपने चुनाया. ये कैसे हुआ? ये ब्लेस्ड, एब्सोल्युटली ब्लेस्ड. हम लोग ने, मैं बोलूँ, हम लोग ने जिसको भी फ़ोन किया, हम लोग ने ऐसे फ़ोन किया कि ये तो ना बोल ही देंगे, मगर पूछ लेते उसमें क्या है. हम लोग ने बीपराग सर को फ़ोन किया, वो बोले आज शाम को डब कर लूँ. हो गया. श्रेया जी को फ़ोन किया, वो बोला यस कम टू द स्टूडियो. फिर मैं स्टूडियो पे गया, मैं बोला श्रेया जी एक और गाना है लेकिन मेरे को फिल्म में नहीं चाहिए, सिर्फ एल्बम के लिए चाहिए, आप करोगे? यस डन. मेरा एक और गाना था, मैं 3 बार गया उनके पास. तो एंड आई एम a lover. I'm somewhere in my heart I'm still old school, and I wanted Shreya ji, I wanted Sonu ji, Biprak sir, Vishal Mishra, and Javed Ali. So what an album! What an album! You know, and we were pinching ourselves. We were pinching ourselves sitting, and with Vishal Khurana, who's done 4 of the songs, and Vishal Mishra has done the Qawwali, and Azim has of course helped us with the Qawwali. It has been the most fulfilling process of my life. The music that we did, and we did all at Yash Raj with Vijay Dayal sir, who is just, he's family. He's family now, and we're too lucky, we're too blessed for this. I can't believe that I open my album on Spotify and I read the names and I can't believe that this is my album. Wow. But it's not my album. I deserve 0 credit. It's all Vishal Khurana and Vishal Mishra, honestly, and Kausar ji and Jani. But yeah, आपकी भी है, because it all could be possible just because of you, because you are directing this film, and इतनी अच्छी कास्ट आपने assemble करी है, इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो मतलब एक स्टोरी भी बहुत पावर पैक लग रही है. लास्ट में मैसेज ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से जो सरजमीन जो फिल्म है, ऑफ कोर्स मेरी पहली फिल्म है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट. बहुत मेहनत से बनाई है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन इनटू इट, और आई होप यू लाइक द फिल्म. Our koshish was that you will enjoy the film, and we worked towards you enjoying the film. So I really wish that you like the film. We've made it with complete honesty and heart. And from you, sir? Well, I mean, Sarzameen is a film that is a very intricate, complex human drama, which is set against a spectacular backdrop of Kashmir and insurgency and the army. And it's got some really big-scale visuals and action, all through never losing touch with the emotional core of the film. So I think that put together is a very interesting viewing experience. And like Kayoze said, I hope you have as much fun watching the film as we have had making it.
It's been a long time coming, and I'm really looking forward to what the audience thinks about it. एंड दैट्स ट्रू, आसान नहीं है मनाली में भी शूट करना क्योंकि स्नोफॉल भी हो जाती है, बहुत सारे दिन कैंसिल भी हुए होंगे एंड आई एम वेरी श्योर बहुत चैलेंजिंग रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much.